Now, dear student, today we are going to study properties of bases. Bases की property क्या क्या होती हैं? Base release hydroxide ion in a water solution or aqueous solution. Base are having property to neutralize acid. Base denatured protein. What is the meaning of this? Denaturation of protein. Protein denaturation means protein is made up by chain of amino acids, and that base or NaOH or other alkalis, they are having ability to disturb that particular chain. Means they disturb the arrangement of amino acid in a protein. That is called denaturation of protein. ठीक है, वो प्रोटीन को ऐसे बोलेंगे, प्रोटीन के को डिस्टर्ब कर देता है, प्रोटीन में एमिनो एसिड की चेन को डिस्टर्ब कर देता है, प्रोटीन की प्रॉपर्टी को डिमिनिश कर देता है, उसे बिगाड़ देता है. ठीक है, मैंने जैसे कहा आपसे, बेस न्यूट्रलाइज एसिड in a neutralization reaction. Yesterday we also studied same thing, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसे उदासीनीकरण की क्रिया कहते हैं. इसमें कोई भी बेस एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर देता है. यहां पर एग्जांपल दिया हुआ है, NaCl, NaOH react with HCl and form NaCl and H2O. Now next point is base turn red litmus to blue. बेस जो होते हैं रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं. ये प्रॉपर्टी बेस में होती है. Bases having bitter taste, they are bitter in taste, ये स्वाद में कड़वे होते हैं. जबकि एसिड के बारे में हमने क्या सोचा, क्या पढ़ा था, they are sour in taste, they are, वो खट्टे होते हैं, जबकि बेस जो होते हैं वो कड़वे होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे हम. Some properties of bases: it produce hydroxyl ion in a water, taste bitter, chalky. चौकी टेस्ट किसी को मालूम है? कैल्शियम ऑक्साइड यदि आपने कभी बचपन में खाया हो या टेस्ट किया हो तो उस तरह का टेस्ट होता है. दे फॉर्म ए इलेक्ट्रोलाइट. यस, NaOH को डिसॉल्व करेंगे तो वहां पर आपको हाइड्रोक्सिल आयन और Na+ आयन मिलेगा. फील सोपी, साबुन के जैसा आपको फील आएगा. NaOH यदि आपने यूज किया हो, NaOH की पैलेट से NaOH का सॉल्यूशन बनाया हो, तब आप समझ सकते हैं इट इज हैविंग ए सोप लाइक फीलिंग. आपके हाथ जो है चिकने हो जाएंगे पूरे, उसे आपको धोने में टाइम लगेगा. स्लिपरी, मैंने बताया आपको. रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. यू अंडरस्टैंड दिस थिंग. Now pH is greater than 7. इनका जो pH होता है वो 7 से ज्यादा होता है. pH स्केल जो है वो 1 से 14 या 0 से 14 के बीच में डिवाइड होता है. 0 से 7 तक जो वैल्यूज होती हैं दे आर एसिडिक इन नेचर, एंड above the 7 up to 14 that values those basic solution or basic in nature. ठीक है, बेस जो है दे टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, pH and pOH.
Pure water has equal concentration of hydrogen and hydroxide ion. So it's are having same concentration of H plus ion and OH minus ion, means it is neutral in nature. It is not having acidic or basic pH. It is having pH 7. Each is 1 raised to power 10 raised to 1 into 10 raised to power minus 7 ग्राम आयन पर लीटर. हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी इतना होता है और H प्लस आयन का भी कॉन्सेंट्रेशन इतना होता है, इसलिए सॉल्यूशन हमारा न्यूट्रल होता है. ठीक है. यदि H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन 1 is to 10 raised to power minus 7 से ज्यादा होगा तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा. और यदि हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन 1 is to 10 raised to power minus 7 से ज्यादा होगा तो सॉल्यूशन एल्कलाइन होगा. ठीक है. यहाँ कंफ्यूजन नहीं करेंगे आप. हाइड्रोक्साइड H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, मीन सॉल्यूशन एसिडिक. OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, मीन सॉल्यूशन बेसिक. और यदि दोनों का सॉल्यूशन 10 raised to power minus 6 minus 7 है तो सॉल्यूशन न्यूट्रल कहलाएगा. To know the exact strength, it is necessary to have some scale by which strength could be measured. तो आपका सॉल्यूशन का पीएच कितना है इसको पता करने के लिए एक स्केल होना चाहिए. और सोरेंसन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1919 में एक पीएच स्केल डिराइव किया. He given the concept of pH scale to measure the pH of the solution. यहां देखेंगे हम, ये सोरेंसन का पीएच स्केल है. pH is a way to express acidity or alkalinity in a aqueous solution. It is a negative log. It is a negative log of the hydrogen ion concentration. pH की डेफिनेशन क्या होगी? pH की डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन एग्जाम में कहीं कहीं पूछी जाती है, तो pH की सिंपल डेफिनेशन आप दे सकते हैं. इट इज अ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड pH. It is a measure of the concentration of proton in a solution, hydronium ion. pH equal to negative log of hydrogen ion concentration, or pH equal to negative logarithm of hydronium ion concentration. हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम आयन बोथ आर सेम. ये सेम कहेंगे क्योंकि H प्लस आयन जब वाटर में प्रेजेंट होता है तो इट रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म हाइड्रोनियम आयन. तो बोथ आर द सेम. हम दोनों इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं. यहाँ पर देखेंगे, इफ यू हैव पेन एंड पेपर देन प्लीज नोट डाउन pH इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन. दिस वन, दिस इक्वेशन यू मस्ट नो. And POH value is a negative logarithm of hydroxide ion concentration. Now this is a pH scale is given in a downside of the slide. 1 to 7 that is acidic in nature, and 7 to 14 that is basic in nature, and 7 is a point in which a solution is neutral. It simply means your solution contain H plus ion and hydroxide ion concentration are same in this solution. Now next is
is again scale pH. The pH scale is a way of expressing the strength of acids and base. Instead of using very small numbers, we just use the negative power of the 10 on the molarity of H plus ion or hydroxyl ion. Under 7, that is acid, I earlier told you, and 7 is a neutral, and over 7 7 से ज्यादा होता है वो बेस होता है, 7 से कम जो होता है वो एसिड होता है, और 7 न्यूट्रल होता है. यहां पर देखेंगे आप एसिडिटी 0 वैल्यू यदि है तो दैट इज ए 1 मोलर HCl सॉल्यूशन. उसकी जो एसिडिटी है दैट इज इन pH स्केल इट्स नोट एज 0. नाउ आपका स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसकी एसिडिटी अप टू 2 pH. लेमन जूस 2.5. विनेगर जो सिरका आप यूज करते हैं उसकी जो एसिडिटी होती है दैट इज 3, approximate 3. Milk 6.8. Pure water that is 7. Blood 7.4. And ammonia solution that is near about 12. And 14 that is 1 molar NaOH solution. This is acid and base and neutral scale. Now calculating the pH. How we calculate the pH? Here simply formula I earlier given you, this pH equal to negative logarithm of hydrogen ion concentration. Now example, if hydrogen ion concentration is 1 is to 10 raised to power minus 10 means pH of the solution is negative logarithm of 1 is to 10 raised to power minus 10, and after the taking of log that pH equal to 10. Now in the another example, if hydrogen ion concentration is 1.8 is to 10 raised to power minus 5, then you directly take a log of this pH. Log 1 is 1.8 into 10 raised to power minus 5, and your answer is pH 4.74. If you want, you can take a screenshot of this slide also. This is a simple example to calculate the pH. Now, dissociation of water. Dissociation of water, here you can see the water is dissociated in a H plus ion and OH minus ion. Water gives proton and hydroxyl ion. Here proton react with hydronium water and form a hydronium ion, that is H3O plus. In water there is a strong partial negative charge on the side of the oxygen atom and the partial positive charge on the side of hydrogen. Why this has happened? Because in periodic table hydrogen is electropositive and it releases its sharing electron towards oxygen. You can see this is a bonding electron, and bonding electron shifted. It should be in between the hydrogen and oxygen, but due to the higher electronegativity of oxygen, it shifted towards the oxygen. Similarly, happened this sharing electron shifted towards the oxygen. Because of this, oxygen attacked the sharing electron towards
nucleus of oxygen or towards the oxygen, then slightly negative charge develop on an oxygen because electrons density is increases and electron density is decreases in a side of hydrogen, so they got a slight positive charge. So as you know, water is not a non-polar solvent, it is a polar solvent and it is having polarity plus H plus ion, hydrogen having partial positive charge and oxygen having partial negative charge. It is simply written in oxygen is electronegative, that is it pulls the electron towards the itself, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, इसलिए हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये रीजन है कि आपका वाटर जो है वो एक पोलर सॉल्वेंट है, इट इज हैविंग पोलर सॉल्वेंट, इसमें ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। Each hydrogen ion unites with a water molecule to produce hydronium ion. जैसे ही वो हाइड्रोजन आयन वाटर मॉलिक्यूल के पास जाता है तो हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, तो वो ऑक्सीजन से बाइंड हो जाता है और हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करता है H3O प्लस, मींस इट गॉट ए पॉजिटिव चार्ज। Now next slide is H2O can function as both acid and base. अनुष्का ने कल लिखा था because of amphoteric nature water is behaving like a acid and base. She written in her answer. You can understand here. In pure water, it is having H. This is a simple. You can see this is a oxygen atom. This is a hydrogen atom, and all oxygen is attached with hydrogen because hydrogen is positive charge, oxygen is negative charge. They are bound with a hydrogen bond. This type of binding is present in a water. In equilibrium constant of water is Kw, that is having H plus ion and hydroxyl ion, both are having equal concentration and 1 is to 10 is to power minus 14 at 25 degrees centigrade. That is equilibrium constant of water. And auto-ionization, when it ionize, it form a hydroxyl group and hydronium ion. That is written in earlier question here. This is a hydronium ion and this one is hydroxyl ion, and this is auto-ionization and form hydroxyl ion and hydronium ion within a solution or within a water itself. It ionizes. In neutral solution, hydronium ion and hydroxide ion concentration is same. So Kw of water is given here. Hydronium ion concentration, hydroxyl ion concentration is equal to 10 raised to power minus 7. What is molar? The pH scale again you can see ion product of water, pure H2O at 25 degrees centigrade, some molecules ionize, that is form H plus ion and OH minus ion, and concentration of H plus ion and OH minus ion is same, that is I given you, I told you earlier, and negative logarithm of H plus ion concentration is 7, that is 7, pH value is 7 of pure water at 25 degrees centigrade.
You can see it directly. We can solve this thing, or we can explain why water is neutral because of this, because they are have contained both H plus ion and hydroxyl ion in an equal number. आपको समझ में आ रहा है बेटा लोगों? आपको यदि कुछ क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी आफ्टर द क्लास आल्सो. Now ionic product of H2O, that is H plus ion and OH minus ion, इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन जो है pH वैल्यू एंड POH वैल्यू का दोनों का टोटल जो है दैट इज 14. ये 14 रहेगा. आप चाहे तो क्लिक कर सकते हैं इसकी पिक्चर. ये सिंपल कैलकुलेशन, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है ना. Now next is a, you can see in acidic solution hydronium ion concentration is more, hydroxyl ion concentration is less, so solution is acidic. This you can see in the orange line. Neutral solution, when hydronium ion concentration and hydroxyl ion concentration are equal, so this solution is neutral. And in basic solution, hydroxyl ion concentration is high and hydronium ion concentration is low, so it is basic in nature. So you can easily understand what is acidic solution, why it is acidic, because H plus ion concentration is increasing, means hydronium ion concentration is increasing and hydroxyl ion concentration is decreasing. Why neutral? Because hydronium ion and hydroxyl ion both solution, both concentration is same in solution. And why it is basic? Because hydroxyl ion concentration is more greater than the hydronium ion concentration, so solution become a basic. H acidic solution, H plus ion concentration is higher, greater than hydroxyl ion. Neutral solution, both are equal. And basic solution, hydroxyl ion concentration is higher than hydrogen ion concentration. Now you can see. So dear student, today we are studying till this much. If you have any question, any doubt, you can directly ask to me.